हिमालयन नेशनल ट्रैक, दैट्स अ नेशनल पार्क, लेकिन पार्क बंद है, तो उसके आगे उससे पहले 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो हम कवर कर सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए मैं 2.5 किलोमीटर से चल रही हूँ क्योंकि कोई बस अवेलेबल थी नहीं। सो या काइंड ऑफ फन, कोई है नहीं। शक्ल देख लो मेरी। हाँ हाँ या सो अभी तो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच के इट्स अनदर 6 किलोमीटर्स ट्रैक। और आज सुबह ही मैं वो वाटरफॉल वाला ट्रैक करके आई थी। आई एम रियली पुशिंग माई लिमिट्स राइट नाउ, बट इट्स गुड, वंस इन अ वाइल करना चाहिए। कोई है नहीं, सो रिमूविंग माई मास्क। So I'm finally trekking towards the Great Himalayan National Park, which is around 7 kilometers. I think I've done just one right now, और उससे पहले के 3 किलोमीटर। But I just hope the weather remains like this. I mean, already मैं बहुत tan हो गई हूँ, but that's a sacrifice you give when you travel too much. And this is my 1, 2, 3, 4, 5th trek in 15 days. Damn. Okay, that's the view. Whew. And that's me. From here it's 5 kilometers, and this place is literally in middle of the jungle because it's a national park, so of course it's in the middle of the jungle. And it's my favorite thing is gonna happen now, chadhai or utrai. So tough to climb and then climb down and then climb up again. So 5 more kilometers. It's gonna take me another 1.5 hours because on an average I cover 3 kilometers every hour. So let's see. This is the way. Sorry about my voice. Rather dramatic हो गई. Okay. Oh, still a long way. But this is once in a lifetime experience. अगर नेशनल पार्क खुला होता तो I would have gone there because that's really amazing. और मैं तो रुक रुक के इसलिए बोल रही हूँ because I'm walking. अभी आराम से जाना हो रहा है, लेकिन आते वक्त मेरी बहुत बैंड बजने वाली है क्योंकि यहाँ बहुत चढ़ाई है. राइट नाउ आई एम जस्ट डिसेंडिंग, सो आई एम गोना बी हाफ dead while coming up. But there's a waterfall, so let's hope it's worth it. So according to villagers that I met on my way, अभी भी 1 घंटे का ट्रैक बाकी है और मुझे जाकर अभी वापस भी आना है. Okay, in middle of all this, there's a butterfly.
Just wanted you to see this. I think we are almost there because I'm descending even more now, and a village boy told me that it's almost here. So let's see, where is this here? Okay, so after walking 10.5 kilometer in 3 hours 31 minutes, here we are. This is the waterfall, and right there is the gate of the national park. Well, the park is closed right now, otherwise we would have gone inside. So this is it. Oh, this is very cool. Okay, this is the maximum I can go near the waterfall.